Hello viewers, the question is a 600 PF capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 PF capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? So the situation is something like this, that there is a capacitor which is charged with a power supply with a certain voltage source. It acquires the charge and then the battery is disconnected and another uncharged capacitor having the same value of capacitance is connected in parallel across it, and when this connection is made there is a loss of certain energy, and we have to calculate this loss in energy we have to calculate. The loss is energy in terms of heat due to the charge transfer which takes place from the charged capacitor to the uncharged capacitor. So in the first step, this capacitor acquires some charge, and in second step, the stored charge it get into the uncharged capacitor till both the capacitors are having the same charge. And in this process, there is a loss of energy. Now let us calculate the energy in the first case. Then we calculate the energy in second case. Then we subtract the initial energy minus the final energy. So let us calculate the stored energy in the first case. The stored energy in a capacitor can be calculated by any of these three formulae: half CV square, Q square upon 2C, or half QV. These are the three formulae out of which we have to use any one. So in this situation, we have given C as well as V. So better we use the first formula, U equals to half CV square. So this is equal to half multiplied by 600 into 10 power minus 12 multiplied by 200 whole square. So this comes out to be 300 multiplied by 10 raised to the power minus 12 multiplied by 40000. After calculating it, this value comes out to be 1.2 into 10 raised to the power minus 5 joules. So this is the energy in the first case. If you want to calculate the charge acquired during this first step, so Q equals to CV, we have to use this formula. So Q is equal to 600 multiplied by 10 to the power minus 12 multiplied by 200. So this comes out to be 12 multiplied by 10 raised to the power minus 8, or we can say that 1.2 into 10 to the power minus 7 coulomb charge. So this is the charge which this capacitor require in the first step. Now when this charged capacitor is connected to the uncharged capacitor, there is equal distribution of charge because the capacitance is same, so that's why the charge is equally distributed among these two capacitors. So we can say that half this value 1.2 into 10 to the power minus 7 upon 2, which is equal to 0.6 into 10 to the power minus 7. So this amount of charge goes on each capacitor. So 0.6 into 10 to the power minus 7 coulomb in first capacitor, and similarly 0.6 into 10 to the power minus 7 coulomb on the second capacitor. Now the total energy in the final case, this is the final case and that was the initial case. Initial case energy was 1.2 into 10 to the power minus 5 joules, and in the final case it is U1 plus U2, where U1 is the energy of the first capacitor and U2 is the energy stored in the second capacitor. So now we can use the formula Q square upon 2C here, Q square upon 2C here, because we know the value of Q as well as we know the value of C. So Q square upon 2C, Q square upon 2C. Both the capacitors are having the same charge as well as both the capacitors are having the same capacitance. So Q and C, we take the same letters here. So this value comes out to be Q square upon C. Now putting the respective values, 0.6 into 10 to the power minus 7 and its whole square upon 6 into 10, 600 into 10 raised to the power 600 into 10 to the power minus 12. This is the capacitance. After solving this, this comes out to be 0.6 into 0.6 into 10 to the power minus 14 upon 6 into 10 to the power minus 10. Now we can write this value as 6 into 6 into 10 to the power minus 16 and then plus 10 upon 6. Now this 6 cancels with this 6. So this comes out to be 0.
this comes out to be 6 multiplied by 10 to the power minus 6, or we can write it as 0.6 into 10 to the power minus 5 joules. So this is the energy, total energy in the second case, in the final case. Now we have to calculate the change in energy, because this is the amount of the loss in energy. So the loss in energy is equal to the initial energy minus the final energy. So this is equal to 1.5, 1.2 into 10 to the power minus 5 minus 0.6 into 10 to the power minus 5. So this comes out to be 0.6 into 10 to the power minus 5 joules. So this is the amount of energy which is lost in the process. So this is the final answer, 0.6 into 10 to the power minus 5 joules. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको एक 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया गया है। इसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है सप्लाई से और कनेक्ट किया गया दूसरे एक कैपेसिटर से, जो कि कैपेसिटेंस उसकी सेम ही है, 600 पिकोफैरेड की ही कैपेसिटेंस है, लेकिन वो अनचार्ज्ड है, उसके ऊपर चार्ज जीरो है। तो इस प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट केस में, यानी कि जिस समय एक सिंगल कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया गया है, उस समय इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे। फिर उसके बाद सेकंड केस में हम जो है फाइनल जो है स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम जो है एनर्जी के लॉस को जो है कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूले हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या हाफ क्यू वी। इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज़ किया सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अगर ध्यान से देखें तो हमें एक तो c गिवन है, एक हमें v गिवन है, तो बेटर ये है कि हम हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं। c की वैल्यू पिकोफैरेड में दी है, इसको हम फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वोल्टेज दे रखी है 200, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद स्टोर्ड एनर्जी निकल के आती है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल्स। तो ये फर्स्ट केस में एनर्जी हो गई। सेकंड केस में एनर्जी निकालने के लिए पहले हम जो चार्ज एक्वायर करा है 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर ने फर्स्ट केस में, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चार्ज होगा बराबर कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। कैपेसिटेंस की वैल्यू फैरेड में हो जाएगी 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है हमें विद द वोल्टेज विच इज 200। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्स। अब सेकंड केस की अगर बात की जाए तो 600 पिकोफैरेड का जो चार्ज कैपेसिटर है उसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 का जो टोटल चार्ज था पिछले केस में, वो डिवाइड बाय 2, यानी कि 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर आ जाएगा। हमें निकालनी है इस केस में भी एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो सम होगा पहले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम यहाँ फॉर्मूला बेटर ये है कि हम यूज़ करें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्योंकि हमें क्यू भी पता है और सी भी पता है। दोनों ही कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस सेम है, दोनों ही के ऊपर चार्ज जो है 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम सेम है, तो इसलिए हम सेम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इन दोनों को सम किया तो हमें मिलता है क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू की वैल्यू को पुट किया 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, इसका होल स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय सी, यानी कि 600 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 0.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 जूल्स। सो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल के आती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू द एनर्जी इन द सेकंड केस। और हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी, जो कि बेसिकली हीट की फॉर्म में जो है लॉस हुई है, तो वो बराबर होगी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी माइनस द फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी की बात की जाए तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5, और फाइनल स्टोर्ड एनर्जी की बात की जाए तो 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 5। इस सब्ट्रैक्शन को करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल्स। So this is the amount of the loss energy in this case. So hope you understand the explanation. Thank you.